Yes, bete, today we shall start with the topic understanding quadrilaterals. Before we start the topic, we must know certain terms which are used in this chapter. So first let us know those terms, define them and understand the concept of understanding quadrilaterals. First in the list is the plane surface. So what do you mean by the plane surface? Plane surface is the flat surface that extends in all directions is called a plane surface. बेसिकली क्या होता है प्लेन सरफेस मीन्स स्मूथ फ्लैट, ऐसे उबड़ खाबड़ सा जो होता है वो नहीं होता. सो प्लेन सरफेस इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शंस. नाउ लेट अस ड्रॉ द फिगर फॉर द प्लेन सरफेस. एनीथिंग लाइक दिस. Any way you can make. And so this is what this is basically the plane surface. Okay, now next is the plane curve. Now what is plane curve? Plane curve, the curve that lies in a single plane. What do you mean by the single plane? Single plane का मतलब flat, there is no thickness in it. So maybe this is a plane curve. See, for this is a plane curve. All right. Now next is open curve. The curve which begins at one point and ends at the other point. That is called the an open curve. Okay, let us draw the figure. Open curve. See, it is starting from here, moving here, 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 and say ending here. Okay. Another example. Suppose it starts from here, moves here like this, and ends here. So beginning point is here, ending point is here. So this is an example of open curve. Now next is the closed curve. The curve which begins and ends at the same point is called a closed curve. Now see the example of closed curve. Closed curve starts from here, moves here like this anywhere, and then again moves and meets here. Okay, so this is called the example of closed curve. Now let us see the next. Next in the list is the simple curve. What is the simple curve? The curve which is simple
if it does not cross itself, क्रॉस नहीं करता ये, ठीक है. से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, वी कैन मेक इट लाइक दिस, मोर लाइक एन ओपन कर्व, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व. नाउ व्हाट इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व? द कर्व which begins at one point and ends at the same point without crossing itself. It is called a simple closed curve. Okay, let us draw the figure. This is curve is starting from here and then ending here only, but it has not crossed anywhere. Now here, with the help of line segments, the curve started, it moved like this and again ends at the same point. So this is also a simple closed curve. And now the difference between the simple closed curve and the closed curve is that जो closed curve होता है वो कहीं पे कट करेगा, क्रॉस करेगा, और जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है वो कहीं पे कट नहीं करता, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे एंड होता है. नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. हियर द फिगर्स आर ड्रॉन. वी हैव टू आइडेंटिफाई विद विच इट मैचेस. ओके, नाउ फर्स्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? बिगिन्स एट वन पॉइंट, एंड्स एट द सेम पॉइंट एंड डज नॉट क्रॉस. तो यहाँ पे ढूंढो कौन सा फिगर है ऐसा. हमें ये दिखता है, ये वाला, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया. सो दिस मैचेस विद दिस, ठीक है. नाउ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल. पहले तो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए. क्लोज्ड कर्व इनमें से देखो कौन सा है, ये वाला है क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व में बिगिनिंग एट वन पॉइंट एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट. सो पर ये सिंपल नहीं है. सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल इस तरीके का होता है, ओपन टाइप का रहता है. सो इट मीन्स दिस मैचेस विद दिस, ठीक है. अब सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड. सिंपल कर्व है. सिंपल कर्व मतलब थोड़ा सर्कुलर होगा, सेगमेंट से बना होगा, मगर it is not closed. So you see here this matches with this. Now the second will match with this. It is not a simple curve. Simple curve नहीं है, ये खुला तो है लेकिन यहाँ पे आके कहीं क्रॉस कर रहा है. So it matches with D. Okay. Now next definition is a polygon. What is a polygon? It is a simple closed curve which is entirely made up of line segments. ठीक है. अब ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है. सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? बिगिन्स एट वन पॉइंट, एंड्स एट द सेम पॉइंट, बट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. ठीक है. अब जो पॉलीगॉन है इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो लेट अस ड्रॉ द फिगर. ये देखो, ये बनाया मैंने ट्राइंगल. सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, मूव्स हियर, दिस साइड एंड एंड्स हियर. ठीक है.
तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया एंड इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. नाउ आई मेक एनी फोर साइडेड फिगर. दिस इज अगेन अ पॉलीगॉन. Say suppose starting from here, again ending but not crossing anywhere, right? These line segments, these are called the sides of the polygon. So we say the line segments that make the polygon are the sides of the polygon. All right. Now coming to the diagonal of the polygon. What is the diagonal of the polygon? ठीक है. Now let us draw one polygon. I have drawn a rectangle. Okay. A, B, C, D. In the previous class, we have already learned what are the diagonals of the rectangle. This is the diagonal of the rectangle. ठीक है. So we can say this is the diagonal of the polygon. This is also the diagonal of the polygon. ठीक है. Now how do we define the diagonal of the polygon? Basically ये क्या है? ये एक line segment है. ठीक है. Joining the non-consecutive vertices of the polygon. नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं. एक के बाद एक, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव. अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव, अब बी के कॉन्जिक्यूटिव कौन से हो गए? सी. बी और सी कॉन्जिक्यूटिव है, बी और ए कॉन्जिक्यूटिव है. तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा हो गया? बी और डी. तो व्हाट इज डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन? इट इज द लाइन सेगमेंट joining two non-consecutive vertices of the polygon. ठीक है. Now there is a formula to find the number of diagonals in the polygon. So formula for finding the diagonal of polygon with n sides. अभी तो यहाँ पे 4 sides हैं. अगर sides n हैं तो that is formula is n into n minus 3 upon 2. This is the formula where n is the number of sides of the polygon. ठीक है. तो अब हम ये रेक्टेंगल देखते हैं. इन अ रेक्टेंगल या इन अ क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी बोल सकते हैं. नंबर ऑफ साइड्स आर 4. So number of diagonals is equal to n, मतलब 4 minus 3 upon 2. This is equal to 4 minus 3 is 1 upon 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4. This is 2. So you see that in a quadrilateral there are 2 diagonals. Now next in the definition is interior of the curve. What is interior of the curve? It is the area enclosed inside the curve. It is the area enclosed inside the curve. जैसे ये कोई कर्व है ये, तो इसके अंदर में जो एरिया एनक्लोज होगा दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द कर्व. इसके अंदर वाला. ठीक है. तो एक्सटीरियर क्या हो गया? एरिया which lies outside the curve, that is called the exterior of the curve. ऐसे ही मान लो ये हो गया हमारा
कर्व, और ये जो एरिया है बाहर में जितना भी ये सब कुछ है, ये दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व. Now we come to convex and concave polygons. What are convex polygons and what are concave polygons? This topic we shall discuss in the next class. For today, since the time is over, I will wind up here only.